So any CR7 Sifu, keep your camera on, beta. CR7, then you will have to keep on unmute. Okay, sir. Mazu bhai, how can you get the first question wrong? So guys, you are in grade 6. आपको 1 minute per question मिलेगा. So don't take more than that time. I did a calculation mistake. For smaller numbers तो आप oral भी कर सकते हो. So Uday, Tani Bani, CR7 and Singer. Sir, I'm sending. Sending. CR7, if you have done one, then you can send one. Adhiraj, I am talking to you, beta. अगर आपका one हुआ है तो one send कर दो. Singer, Yes, sir. I'm sending both. you can speak the first one, CR7. Sir, the first one is 3 multiply 3. Beta, it's wrong. You use prime factorization. Yes, sir. What are the prime factors of 36? Sir, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. What is the prime factors of 48? Sir, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. बेटा नहीं, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा. इसमें एक ही 3 आएगा. एक 2 आपने प्राइम फैक्टर्स गलत फाइंड किए. यहाँ पे 2 आना चाहिए था. अंडरस्टूड? Yes, sir. देन अब मैंने आपके करेक्ट, बिकॉज 2 4 8 16 एंड 3 48. देन व्हाट विल बी द HCF? Sir, 3. 3 कैसे बेटा? हम फैक्टर्स लेते हैं ना. देखो, देर आर टू कॉमन्स हेयर, टू कॉमन्स हेयर. HCF में तो हम कॉमन देखते हैं. 1 3 कॉमन यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे. So 2 into 2 into 3, that is equal to 12. Understood, CR7? Yes, sir. बेटा ये कैसी, ये थोड़ी हम देखेंगे एक 2 कॉमन ले लिया, एक 3 कॉमन ले लिया. वी हैव टू, इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टू सी ऑल ऑफ देम.
अदरवाइज यू कुड हैव जस्ट डिड बाय लॉन्ग डिवीजन. आपने लॉन्ग डिवीजन क्यों नहीं यूज किया? सिंगर, विच मेथड डिड यू यूज? Sir, I understood my mistake. I used the method like I first found all the multiples of 36 and 48 common बेटा वो multiples. मेथड नहीं करते ना हम, वो आपको कई बार मैंने बताया. दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. एंड व्हाई यू गाइस डिड नॉट यूज लॉन्ग डिवीजन? CR7 फिर आपने म्यूट कर लिया. बेटा मैं अलाउ नहीं करूंगा फिर क्लास में, अगर आप म्यूट भी कर रहे हो, कैमरा भी ऑफ है. आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू. नेक्स्ट टाइम हुआ देन आई विल हैव टू जस्ट रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. डू यू अंडरस्टैंड अधिराज? Yes, sir. बेटा व्हाई यू डिड नॉट डू द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आई वांट टू नो. Sir, I forgot to do that. बस भूलना नहीं है ना हमें, ये तो मेथड है. HCF के लिए तो मैंने आपको बोला था, इट्स अ वेरी गुड मेथड, द डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड. नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 18. अब गाइस इसके लिए आई विल फाइंड द LCM. LCM will be equal to 36. Now either you, for common multiples, either we can speak the table of 36, 36, 72, फिर इसमें 108 and 144. So you will know that 144 is the answer, which is less than 120. So sorry, 108 will be the answer. So less than 120. Otherwise आपको 120 को 36 से divide करना पड़ेगा. So again you will get the same answer as 108. Understood guys? Yes, So sir. next question करते हैं. So third, fourth कर लो guys. No, see, I have given you the options this time.
So Singer, CR7, any send your answers. Time up. So Batman, what are twin prime numbers? That's the prime numbers that have difference of 2. So which answer did you send, beta? That was mistakenly sent B. B. Okay. They are not twin primes. These are twin primes, 29 and 31. Then sum of all prime numbers between 30 and 50. Batman, मुझे start speaking the prime numbers after 30. 31, Okay. 37, Okay. 41, Okay. 43, Okay. 47, Okay. 49. 49 is not a prime number, beta, because 49 comes in the table of 7. All right, Batman. Okay, sir. And CR7, आपका भी आंसर नहीं आ रहा. Understood. Understood? Yes, sir. 39 is not a 39 comes in the table of 3 and 13. okay, sir. So I hope everyone knows the factor tree method. अधिराज, आपको आता है फैक्टर थ्री मेथड? No, sir. बेटा जैसे ये 1050 है ना, तो इसको इन्होंने टू फैक्टर्स में डिवाइड किया. मींस r into 35 इज गोइंग टू बी 1050. Oh, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 56 करूं, आई कैन डिवाइड इट बिटवीन 7 into 8. आई कैन ऑल्सो डू इट विथ 28 and 2. I can also do it with 4 and 14. okay, sir. तो उसके बाद सपोज आई डू इट विथ 4 and 14, फिर क्या होगा? I can do it once again with 2 and 2. And here I can do it once again with 2 and 7. So we continue till we get all prime numbers at the end. Okay, sir. Okay. So like we use the ladder method to find the prime factors, इस method से भी हमें prime factors आ जाते हैं. जैसे prime factors of 56 are 2 into 2 into 2 into 7. So last में जो prime numbers आते हैं, they are the prime factors. Understood, Adhiraj? Yes, sir. जनरली ये केवल ना बच्चों को पढ़ाने के लिए मेथड यूज करते हैं. व्हेन यू गो टू हायर ग्रेड्स यू डोंट यूज दिस मेथड. जस्ट वो बच्चों को सिखाने के लिए एक मेथड है. दैट्स इट. यू कैन आस्क वॉरियर. वॉरियर, आई एम राइट? यस. Sir, I by mistakenly sent only the answer of fifth question. You can send again both the answers. Warrior, was I right? Sir, Sarah? What is Sarah? then why you asking me? Then why you asking? I thought you must be knowing. So send.
So I have posted a chapter from IMO workbook. It's integers. Everyone practice that chapter. I have already done this chapter that you were making me do from the same book. I've also done. This chapter. Sir, I have also done. Yes, sir. So, Why did you guys do this chapter? Because I was teaching. sir, integers one. No, this one. Sir, I have done integers and this one and one more and two more. I've done integers, not this one. Sir, I've also only done integers, not this. Wait, did we have to do any? बेटा one integers chapter मैंने दिया है. That is the name is changed to other side of zero. All right guys. तो प्रिंसेस किटू उदय एनी CR7 टाइम अब जितना हुआ है उतना भेज दो. Sir, I have done 4 chapters. Why? Sir, like this only. Sir, integers and this one number play and data handling also. My goodness. Singer is so studious. So CR7, which answer did you send? Sir, D. Beta, if two numbers are co-prime, then at least one of them must be a prime number. Sir, I didn't understand. See बेटा co-prime numbers नहीं पता आपको क्या होते हैं. जैसे 7 और 8 co-primes हैं. Their HCF is 1. How many times I have told what are co-prime numbers? Co-prime numbers are numbers whose HCF is 1. Co-prime numbers are numbers whose HCF is 1. They may or may not be prime. For example, 7 and 8. Then 9 and 10. तो दोनों composite हैं. Or examples maybe 8 and 15. Again HCF is 1. So Princess K2, understood? Yes. Yes. Now guys, CR7 समझ आया? Yes, sir. आप भूल क्यों जाते हो प्राइम नंबर्स? इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैंने एटलीस्ट 10 टाइम्स क्लास में बोला है. आप रिपीट करो 5 टाइम्स. को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हुज HCF is 1. Co-prime numbers are numbers whose 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 HCF is 1. ओके. तो नेक्स्ट में गाइस, नेक्स्ट किसका रॉन्ग है? CR7 आपका. एंड उदय हैजंट सेंट. So I will divide 1050 with 35. I will get 30 because 30 into 35 is 1050. आपने डिवाइड किया था अधिराज? Yes, sir. तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे. Sir, it would be sir 5. 5. एंड उदय Q की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से गाइस. Okay, वैल्यू मेरे हिसाब से 7 होनी चाहिए. 7. तो 7 + 5 12. इसमें क्या प्रॉब्लम है?
सर मैं अब वन अगर सर ये मैं पूरा वन जीरो क्वेश्चन फाइव होता जीरो तो मैं इसके नीचे और जाता, 2 और 3 भी करता, बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू टिल आई गेट द प्राइम, ऑल द प्राइम फैक्टर्स। बट ये उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, so otherwise I have to go till 2 3 5 5 7, so these are all my what prime factors. Do the seventh one. And eighth one. They have included some Cambridge concepts this time. ये concept जो है सेवेंथ का, वो केम्ब्रिज का कंसेप्ट है। Sir, Yes. what is after then which? Then which one of the following number is not a factor of 1260? The sent to ma'am.
All right. So let me explain now. So guys, firstly, I will do the prime factorization of 6 and 10. So I will get 3 into 2 into 3 times 7 into 2 into 5. Now I will see how can I make 28 7 into 4. तो मेरे पास 7 times 2 है. So then this number will be divisible by 28. Trick समझ में आई guys? You have to try to make this number from the given numbers. 36, there are two ways to do it. या तो आप prime factors लिख दो. There is one way of finding the prime factors orally also. 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 into 6. फिर each factor will be 2 into 3 times 2 into 3. So otherwise I can check normally also. So Sir, 2 into, yeah. sir, I had sent A option only. बेटा A is not the answer. This number is divisible by 28. इसलिए मैंने टिक. ठीक है. K2, please look here. Even if you haven't got the answer correct. Princess, you too. So 2 into 3 into 2 into 3. मेरे पास 2 है, 3 है, 2 है, 3. एक और 3 है. Yes, एक और 2 3s and 2 2s are there. So 36 can also divide 1260. अब 105 को मैं करूंगा प्राइम फैक्टर्स तो आई विल गेट 5 into 7 into 3. आई कैन डू इट ओरली. पहले मैंने किया 35 into 3. 35 को मैंने लिख दिया 5 into 7. So 105. So 5 into 7 into 3. I can find these 5 into 7 into 3 also in this number. So then 56. 56 can be written as 7 into 2 into 7 into 8. 8 can be written as 2 into 2 into 2. So then I can find 2 here, 1 2 here, but I cannot find the third 2. तो जब आप डिवाइड करोगे 1260 को 56 से, it won't be divided because of that missing 2. तो समझ आया guys? Understood this method? Yes or no? Yes, sir. और Yes, एक sir. और मेथड है. जैसे आपको 36 फ्रेम करना है तो 2 into 3 6, 2 into 3 6 into 6 36. तो अगर आप फैक्टर से 36 बना लो तो then also it will be divisible. Next CR7, what is the divisibility rule of 8 CR7 and Uday? Sir, can I tell? And So yes, can I? CR7 you say. Sir, the last three digits should be divisible by 8. और आर 000. तो अब Yes. आपको लास्ट 3 डिजिट्स तो गाइस डिवाइड करके ही देखनी पड़ेगी. देर इज नो अदर ऑप्शन. तो इजी ऑप्शन क्या होगा? पहले आप स्मॉलर नंबर डिवाइड कर लो 132. देखो मेरी लक अच्छी थी, पहली बार में ही मुझे आंसर मिल गया. गॉट इट? ये इजी ऑप्शन मैंने 132 को सबसे पहले क्यों किया? क्योंकि वो सबसे जल्दी होगा. इट विल सेव माय टाइम. वॉरियर, यू अंडरस्टूड हाउ टू सेव टाइम? डिड यू अंडरस्टैंड? Save time. यस. गाइस अभी 10th छोड़ देंगे, पहले 9th और 11th करेंगे. Sir, I accidentally sent it. I did not mean to send this answer. इट्स ओके बेटा, यू कैन सेंड अगेन.
Warrior, did you ask your mom that I need that, flask or the cup that you are drinking with? Class. So that cup, na, that she gifted on your birthday. Did you ask her? Did you tell her that I also need that? Sir, I'll ask her today. Okay. Because it will be helpful, na? Like you are drinking while studying, I can also drink from that during my classes. Right, Annie? So singer CR7, Uday, and Annie, time is up. Sir, can I send what I've done? Yes. Sir, sir, I sent. So saying CR7, I don't know why you got the first question wrong. So Uday, I also don't know. Uday, beta, see, is this divisible by 10? Yes or no? Sir, It- yes, तो ये मैं क्रॉस कर देता हूँ. Is this divisible by 2? Yes or no? yes, तो ये भी क्रॉस हो गया. Is this divisible by 4? Yes or no? no. बेटा, what is the divisibility rule of 4? Sir, the divisibility rule of force is So you don't remember. बेटा yes. 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट्स, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट्स. आपने वो शीट की थी जो मैंने होमवर्क दी थी डिविजिबिलिटी रूल की? Yes, sir. तो बेटा तब आपने याद नहीं किए थे. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, उदय? So the divisibility rule of 6 is if the digit is नो. उदय, लिसन टू मी बेटा. अगर आप केवल क्लास करोगे, खुद अपना एफर्ट जीरो दोगे, तो हाउ विल इट हेल्प यू? है ना? either you memorize in the class itself or you do my homework. आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया. How will you understand? So the divisibility rule of 4 is if the last two digits is divisible by 4, then my number is divisible by 4. Because 20 जो है divisible by 4 है, तो पूरा number divisible by 4 हो जाएगा. So that's my answer. अब 8 का होता है 3 digits, so why will I check 3 digits अगर मुझे पहले ही आंसर मिल गया? Next, the CR answer is B. answer is 4. No, no, not divisible by 8. Yes, 4 से divisible हो गया तो not divisible by 8. Which of the options shows the pair of co-primes? Co-primes क्या होते हैं? I will ask from Saliba. Co-primes क्या होते हैं? So corporate nine numbers or number is like 17 and 9. डेफिनेशन क्या होती है? सर डेफिनेशन नहीं आ सकती मेरे को कोप्राइम्स अभी की. मैंने आपको 5 मिनट्स पहले डेफिनेशन बताई थी. मैं आपको रट्टा थोड़ी करवा रहा हूं. मैं तो जस्ट एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट यू मस्ट नो, आई एम नहीं टेलिंग मेरे यू. को सर आई नो what coprime numbers are, how they work. हाउ Just दे it's वर्क, just हाउ I दे वर्क, don't. हाउ दे वर्क. आई डोंट वांट एग्जांपल्स. हाउ दे वर्क. So coprime numbers work when two prime numbers have a difference of 2. Those were twin primes. 1. Those were twin primes difference of 2. अब बेटा अगर मैं आपको करवा रहा हूं, आप अटेंशन पे नहीं करोगे तो कैसे वर्क करेगा उदय जी? CR7, what are co-prime numbers? Sir, whose factor is 1? Whose HCF is 1? Co-prime numbers अभी लिखा था यार, क्या कर रहे हो आप? Two or more numbers. So I Whose know the HCF of. So how can. Okay, sir, I understood my mistake. Now I have 15 and 32. तो गाइस, एंड 27 एंड 63, 27 एंड 63 में 3 दिख रहा है मुझे, कॉमन फैक्टर है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. 36 एंड 92 में 2 कॉमन फैक्टर है बिकॉज बोथ आर इवन, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता. 28 एंड 49 में आई कैन सी दे कम इन द टेबल ऑफ 7. दिस ऑल्सो इज नॉट माई आंसर, सो माई आंसर इज ए.
their HCF is 1. Okay. Now guys, next concept is perfect numbers. So perfect numbers, ये first time इन्होंने नहीं, I think previously also there was a question. So perfect numbers are those numbers whose sum of its factors is double of the number. So let's see. हम 4 के फैक्टर्स करते हैं, 1 2 4. तो आप ऐड करोगे 1 + 2 + 4, you will get 7, not double of 4. So let's do factors of 5, 1 comma 5. When you add 1 + 5, again 6, again not 10, I want 10. So then which number will be a perfect number? Let's see, 6. So 1 2 3 6. So when I will do 1 + 2 + 3 + 6, I will get 12. So this is a perfect number. So there are like not many perfect numbers. कुछ common perfect numbers हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. You must memorize them because वो sometimes objective में आ जाते हैं. So examples of perfect numbers are, they are 6, 28 and 496. और मैं एक और बता रहा हूँ, एटलीस्ट 3 आपको याद होने चाहिए, 8128. So first 3 you must remember, 628 and 496. उसके बाद जो होगा, नेक्स्ट जो होगा, बहुत बड़ा नंबर होता है. All right, do we understand? So which of the following is a perfect number? Of course 6. 6. So 12th and 13th. तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पॉसिबल, यहां पे पॉसिबल वर्ड कर देना. they don't mean कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ही होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पॉसिबल. ओके, ये पूरा चैप्टर्स न्यू है. दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो थोड़ी सी मिस्टेक्स आर पॉसिबल. Princes of Punjab. Sir, in the 12th one, I added by mistake that 1540 is not divisible. So same. Beta, whatever you did, see, you have to look at your performance. आपको, मैं किसी को भी डिविजिबिलिटी रूल्स पूछूंगा, एवरीवन रिमेंबर्स, ओनली यू डोंट रिमेंबर.
मैंने HC जो कोप्राइम नंबर्स का कंसेप्ट है, आई हैव टोल्ड एटलीस्ट 20 टाइम्स इन द क्लास. Even I told in this session. Now, beta, in grade 6, Uday, I'm talking to you. I cannot, put that thing in your mind. You have to concentrate and understand. है ना, ग्रेड 3 में थोड़ी है कि मैं रोज आपको एक चीज पूछूंगा बच्चों की तरह. We'll practice once when we are doing the concept. One more day for revision. उसके बाद तो you have to remember. So, Princess ji, let's talk to you. How you did the 12th question? कब तक करेंगे ना ये बात ही. Yes, Princess, how you did the 12th question? Sir, in the 12th question, I first did by A part, so it was not अब आपने divisible. डिवाइड किया ना. आई विल Yes. टेल यू अ मेथड जिससे आपको डिवाइड नहीं करना पड़े. तो यू ऑल्सो लिसन अप एंड अदर किड्स ऑल्सो लिसन अप. आप डिवाइड करोगे बेटा, वन क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे होगा, फिर आप बोलोगे पेपर लेंथी है. सो वी हैव टू यूज शॉर्टकट्स. 15 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 and 5. तो ये 1540 डिविजिबल बाय 15 तभी होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो एंड 5 ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये बात समझ में आई? इफ माई नंबर 1540 इज डिविजिबल बाय 15, तो वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी. तो 5 से तो है, बट 3 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 1 + 5 + 4 is 10. So this cannot be my answer. Now I will check with 24 में भी. अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 3 × 8 is a factor. 8 के I can further do the prime factors, but it is not divisible by 3, so this also is not my answer. Next, what are the prime factors of 22? 2 × 11. Up, guys, this is divisible by 2. And I know the divisibility rule of 11. Uday, yaad hai divisibility rule of 11? No, sir. Beta, I'll today go you will through memorize all. the divisibility rules and get back to me. Do we Yes, understand? yes, sir. So divisibility rule of 11 में I will check the alternate digits. 1 + 4 gives me 5 and 5 + 0 also gives me 5. 5 - 5 gives me 0. So it is divisible by 11. So if it is divisible by 11 and divisible by 2, it is divisible by 22. समझ में आया kids ये बात? Yes or no? So Kitu, Princess, Uday, CR7, Warrior, Warrior of Punjab, have you understood this? Now, guys, next Yes, question. sir. Number is divisible by 2, 4, and 5. So it's a 3-digit number, then the number is. So the easiest बच्चा method is कि आप check करो कि it has to be divisible by 2, 4, and 5. तो ये तो 5 से divisible भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. So my answer could be A part or D part. So 90 is not divisible by 4. So my answer is going to be D part. But there is a method also how we can solve such questions. I'll give you a question in the next class that if I don't give you the options, how can you find it? Okay. Next class में मैं question दूंगा with related to that. But right now I have told the objective approach. CR7 क्यों गलत हो गया ये? Sir, I thought that if it would be divisible by 2 and 5 both, then it would be divisible by 4 also. नो बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कराता ही नहीं. मैं आपको बोल देता इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 4. मैंने क्यों कराया आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? बिकॉज इट इज डिफरेंट. तो डू द 4th and 14th and 15th. Sir, may I go to drink water? Without even asking me, beta, but if you have to leave your seat, you can go after giving the correct answer only. If the water is in the same room, you can drink without asking.
I am the bill is 65 of. Can I go to fill my water? It's the jug is in the next room. बेटा, you have promised me ना कि आप बात करोगे. Yes, sir. Then ठीक है, you can go. The same. All right, guys. So Uday, CR7, Annie, let's see. Sir, I've sent. So the first question, find the smallest values of y and z respectively such that they are divisible by both 5 and 8. तो आप z की वैल्यू देखो, हर ऑप्शन में 0 है, तो z की वैल्यू मुझे देखना ही नहीं है. I just have to see the y's value. So Uday, what is the divisibility rule of 4, 5, sorry, 8. 8. 8 is here. Yeah. Sir, the visibility rule of 8 is that the last three digits So should be 3 digits. divisible. अब if the last 3 digits become 500, because इससे 500 बनेंगी, इससे 510 बनेंगी, इससे आपकी बनेंगी Sir, the 520 and 560. So you have to check the smallest number. So you have to start with 500. तो I think ये divisible नहीं होगा. What's the answer? ये भी divisible sir, नहीं the होगा. answer should be A 520. Yeah, A is the answer. Correct. ठीक है. yes, So sir. Annie, आपको समझ आया? Excuse me, sir. Yes, In the Sifunani. second question, 560 is also But divided by. they have given the smallest values of y and z ना, तभी तो मैंने बोला इस ऑर्डर से चेक करना पड़ेगा मुझे. ठीक है. Any understood? Yes, sir. Sir, in the second question, I did a typing mistake. It was So what's the answer according to you, Annie? sir B. B part. So do 16th and 20th.
So have they made this chapter interesting? Yes or no, guys? No? Guys, आज आप 16 ही कर लो. We'll do the 20th in the next class. Do only the 16th. The sent to ma'am. So they Azu bhai any? Sir, send. Sir, I'm sending. So sent. All right. So my answer is what? Any? Is any here? Yeah. Okay, fine. So okay, kids. We'll resume in the next class because some kids are absent today. So that's all for today. Then bye bye. Enjoy. Bye, sir.